Hi, beautiful people. This is Vishakha, and firstly, thank you so much for being here. Thank you so much for supporting me and coming back to my link and clicking on this video so that you can look at me. I'm so thankful. I right now have 54 subscribers on YouTube, and I am thankful for each and every one of you. Thank you so much. If you like my video, please give it a thumbs up and share it with your friends so we can help each other along the way. And if you have any suggestions or something, just DM me because most of you know me personally. So you can like DM me on Instagram or maybe comment down on the video as well. So thank you for the support. And let's get into the video. So in the last video, we talked about how you can return to your own self, right? So I said in that video that I'm going to make a step by step guide so you can come back to yourself when you're lost. And because मुझे लगता है we all need help sometimes, or if I am able to help just one person at a time, it would be great. I would feel so much better. So the first thing that you should do in order to return to your own self is be quiet. चुप्पी चुप रहिए. Now, चुप रहने का मतलब, you can think that it's an easy thing to do, but it's not. Because now that we have our phones continuously in our hands, we are continuously sending reels to each other, we are continuously looking at social media, या तो we are listening to some podcast continuously, trying to get some information. Continuously we are in some kind of process. Being quiet is not that easy, but if you start doing that, if you start being in the stillness, in the silence, it will make you more aware of yourself. Rose rose 10 minutes, 15 minutes, practice being quiet. Don't talk to nobody, don't call nobody, just keep your phone aside and just sit with yourself for 15 minutes, 10 15 minutes, and that would be enough. That would be enough. क्या आप खुद को 10-15 मिनट्स नहीं दे सकते हो पूरी दुनिया को? और किसी जिसको आप जानते भी नहीं उसकी रील्स पे रीच बढ़ाना इतना इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को 10-15 मिनट्स नहीं दे सकते हो? यू शुड डू दैट. यू शुड ऑलवेज चूज योर सेल्फ. कीप चूजिंग योर सेल्फ. So when you're quiet, when you're in silence, when you're in stillness, then only you will realize what is wrong with you. Then only you will realize what you're facing, what challenges you're facing, right? Start listening to yourself. Stop ignoring yourself. So the second thing that I did, and I want you to do that as well, is start feeling the emotions that you have been avoiding for too long. Yes, we have all been doing that. हम बहुत टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं. What we do is, हम कुछ भी फील करते हैं ना, तो हम उसको ओवर पावर कर देते हैं किसी और इमोशंस के साथ. कि आई एम नॉट सपोज टू फील सैड. अगर मेरे 5 फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक ने मेरे को कोई कमेंट पास कर दिया जिससे मैं हर्ट हो गया हूँ या हो गई हूँ, बट जस्ट टू मेंटेन अ peaceful environment in my friend group, I would not say that. आप बताओ, जिस इंसान को रियलाइज तक नहीं है कि उसने आपको हर्ट किया है थ्रू देयर वर्ड्स, राइट? उस इंसान को आप अच्छा फील कराने के लिए 4 लोगों को अच्छा फील कराओगे या खुद को अच्छा फील कराओगे? खुद आप उन 4 लोगों में फिर से खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाओगे. फिर से उन 4 लोगों में खड़े होगे तो आपके कंटिन्यूअसली दिमाग में ये चलता रहेगा, कड़वाहट आ जाएगी किसी के लिए. वो ज़्यादा बेटर है कि उसी टाइम उस बंदे को, जो भी जिसने भी आपको कुछ कहा है, उसको एड्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक अगेन यू शुड ऑलवेज चूज योर सेल्फ. कोई भी आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड अ रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ इज द मोस्ट important relationship you are
always going to have. You have you until you die. Just, it's simple. It's not that difficult. So rather than avoiding your own feelings and feelings towards others, start realizing those feelings. Start feeling those feelings. Start feeling those emotions you have been trying to avoid for too long. When you do that, na, you are not continuously in state of a conflict with yourself. जब आप अपनी फीलिंग्स को एड्रेस नहीं करते हो ना, अपनी इमोशंस को एड्रेस नहीं करते हो ना, उससे पता है क्या होता है? आपका ब्रेन क्लाउडेड हो जाता है। आपका ब्रेन ये नहीं सोच पाता है कि यार, am I even capable of, like, firstly, am I capable of protecting myself? Yes, no. uh, am i am I doing this right? Am I a fake person? Yes, no. Because I used to question those things to myself. I had this behavior of people pleasing, which is like kind of generational. हाँ, तो मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों को है आदत ये थोड़ी पीपल प्लीजिंग की, बट मुझ में वो ऑब्वियसली थी, बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट माई पेरेंट्स, आई वॉज लुकिंग एट माई रिलेटिव्स डूइंग दैट सेम थिंग. बट जब मैं दुनिया में निकली ना, तो आई यूज टू श्रिंक माई सेल्फ. मैं खुद का बुरा कर देती थी दूसरों का अच्छा करने के चक्कर में. तो उससे क्या हुआ, मेरी रिस्पेक्ट मेरी नज़र में कम हो गई कि भाई मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ. जब आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते तो क्या होता है, खुद के लिए रिस्पेक्ट भी नहीं होती है, दूसरी चीज़ खुद पर भरोसा ख़त्म हो जाता है. उससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है. एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर like 3 hours if I start talking. तो start feeling your emotions, especially those you are trying to avoid. जो आप अवॉइड कर रहे हो उसी में आपके आंसर्स हैं, हमेशा याद रखना. जो भी आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, half of your answers are in those avoiding behaviors, in those avoiding emotions. So the third thing that I did in order to heal, or you can say in order to return to myself, was reconnect with my body. I started reconnecting with my body, and I did it with like all my intentions. I used to go out barefoot, walking in the grass. I used to do yoga, subah उठ के. I used to do meditation. I actively choose myself कि हाँ मुझे, I want to get out of this rut. So you should do the same, because your body is a temple. ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है. Your body is your temple. Yes. And your body is a vessel through which the universe provide you information. Your body is a vessel of information. It will be with you till you die. You should be taking care of it. So the fourth thing that I did to return to myself, that you should do too, is question the noise. Now you'll be asking, what kind of noise? अभी क्या होता है ना, हम हमारे दिमाग में अकेले नहीं रह रहे. अब आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू और एनीथिंग, बट वी आर नॉट अलोन इन आवर माइंड. Our mind is made up of thousand and thousand of limiting beliefs which were given to us by our parents, given to us by our friends, given to us by our dada dadi or people around us. Basically, limiting beliefs क्या होते हैं? Any kind of belief which are keeping you in some kind of negative space. अब ये तो है, लिमिटिंग बिलीफ अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं. तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगी बाद में, बिकॉज आई लव टू टॉक एज यू कैन सी. सो क्या होता है ना, जब जो नॉइज जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, वो क्या है? हैव यू एवर हैड अ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड कि यार मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड देन अ वॉइस गिव यू आंसर. जो आपके ब्रेन में ही एक आंसर आपको मिलता है, सबको मिलता है, ठीक है? तो वो वॉइस क्या आपकी खुद की है, आपकी हायर पावर, आपकी हाईएस्ट सेल्फ की है? क्या है वो पावर, क्या वो
जो जो भी वो वॉइस आ रही है, क्या वो आपकी पावरफुल वाली वॉइस है, और आर दोज वॉइसेस जस्ट voices just the voices of people who have broken you, who have betrayed you? क्या वो आपके कान में फुसर फुसर बोल रहे हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब एंड देर आर दीज वॉइसेस टेलिंग यू कैंट डू दिस, यू नॉट गुड इनफ, यू नॉट ब्यूटिफुल इनफ. तू कैमरे के सामने कैसे बैठेगी? लोग तुझे जज करेंगे, तेरे अपने लोग तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. या दैट हैपेंड, बट आई गेट टू डिसाइड कि मुझे कौन सी नॉइजेस सुननी है, मुझे कौन सी वॉइसेस फॉलो करनी है. और हमारा हायर सेल्फ, हमारा पावरफुल सेल्फ विल नेवर एवर ट्राई टू ब्रेक यू. जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर आपको वैसी वॉइसेस आती है ना जो आपको डाउट करवाती है अपने ऊपर, बस बोल दो अपने दिमाग में. मैंने खुद को ये सब चीज़ें जब मुझे बोली जाती थी थ्रू दोज वॉइसेस, व्हाट आई यूज्ड टू से इज, आई यूज्ड टू टेल माई माइंड, these voices are not mine, these answers are not mine, these जो भी ये चीज़ मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर रही है ना, ये मैं हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी और का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं किया है. हाउ कैन आई बी अनकाइंड टू माई सेल्फ व्हेन आई एम नॉट इवन अनकाइंड टू अदर पीपल? दोज वॉइसेस आर नॉट माई वॉइसेस, एंड यू हैव टू कीप रिपीटिंग इट टू योर सेल्फ. स्टार्ट लिसनिंग टू दोज वॉइसेस. आपको समझ आ जाएगा बहुत जल्दी कि वो वॉइसेस किसकी हैं. मुझे समझ आ चुका है मेरे अंदर जो वॉइसेस चलती थी वो किसकी थी. नाउ आई डोंट केयर अबाउट दोज वॉइसेस. अभी भी मुझे वॉइसेस आते हैं जो मुझे लेजी बनाते हैं या मुझे एक प्लेस में रखने की कोशिश करते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दोज वॉइसेस बिकॉज आई ट्रस्ट माई सेल्फ इनफ. और वो ट्रस्ट कहाँ से? रिटर्निंग टू सेल्फ. अगेन, बाय रिटर्निंग टू योर सेल्फ, those voices will stop telling you what to do, right? So the fifth thing when you try to return to yourself is return to what makes you happy, what used to make you happy. कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी इट वॉज सिंगिंग. आई एम नॉट दैट गुड ऑफ अ सिंगर, बट आई लव्ड सिंगिंग. तो मैं कभी कभी ऐसे ही गा लेती हूँ. फॉर मी दैट इज़ टू मेक वीडियोज़ एंड टेल पीपल, कुछ भी, मतलब मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है थ्रू कैमरा. आई लव वॉचिंग माई सेल्फ रिकॉर्डिंग अ वीडियो. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट अगेन. रिटर्निंग टू सेल्फ. Returning to self is returning to your whole entire being. Everything you enjoyed is your happiness का वो पार्ट है आपका. जब आप वो चीज़ करना दोबारा शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग दोज इमोशंस अगेन. कई लोगों के लिए हो सकता है कि बाइक राइड्स ऐसी हो, कई लोगों के लिए होती है. आई लव रनिंग, आई गो फॉर रनिंग. अभी तो मैं योगा कर रही हूँ, बट हाँ, आई यूज टू गो फॉर रनिंग. और अभी भी इफ आई स्टार्ट लाइक माई माइंड स्टार्ट क्लटरिंग, आई गो फॉर अ वॉक और आई गो फॉर अ रन, बिकॉज दैट हेल्प्स, बिकॉज दैट इज माई सिग्नल टू माई ब्रेन दैट आई एम रिटर्निंग टू माई ओन सेल्फ. Stop fucking with my brain, right? So the fifth thing that has like helped me along the way is sixth, sorry. Returning to self comes with a cost, and if you are ready to pay the cost, तो आप लाइफ में कभी हारने वाले नहीं हो. हाँ, चैलेंजेस आएंगे. ऐसा नहीं होता कि इफ़ यू हैव रिटर्न टू योर सेल्फ चैलेंजेस आना बंद हो जाएंगे. नहीं, यू विल always face challenges because that is what life is about. It will keep throwing challenges at you to check you, to test you, to see how far you can go. But it returning to self comes with a cost, and that is you have to get rid of the mask you're wearing. You have to. अगर आप चाहते हो कि आप खुद के पास वापस आ सको, तो आप एक सच्चे इंसान तो होने चाहिए ना. यू शुड बी अ रियल पर्सन एटलीस्ट. यू कांट रिटर्न टू अ मास्क, कैन यू? यू कांट. सो इन ऑर्डर टू रिटर्न टू योर ओन सेल्फ, let go of the masks you are wearing
to protect yourself, stop wearing them. अब प्रोटेक्ट करने में ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हर किसी उल-जलूल आदमी को आप अपनी लाइफ में एंटर करने दे रहे हो, नो। इट्स जस्ट दैट कि खुद को प्रोटेक्ट करो, लेकिन सच्चे होके, ना कि किसी के साथ 4 मीठी-मीठी बातें कर ली, दोस्ती बढ़ा ली और अंधेरे में उसको गालियाँ मार रहे हो, या जब आप अकेले हो तो उसी के बारे में बुरी बातें कर रहे हो। हीलिंग ऐसे नहीं होती दोस्त। You have to be raw, honest with yourself and with the people around you. And I too have been fake, but I have been faking being too good because मेरे को people pleasing की आदत थी, as I said. ठीक है? Now that I am continuously trying to come back to myself, and it's a continuous practice, एक दिन में नहीं होगा. So if you're trying to come back to yourself, I want you to be honest with yourself and stop wearing the mask. It's not helping anybody, especially not you. Okay, that's it for today's video. I hope you like it. And if you noticed me looking at my notes, so I created these notes in order to not get like साइड ट्रैक हो जाती हूँ मैं कई बार, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही होती हूँ उससे बिल्कुल भटक के कुछ और बातें करने लग जाती हूँ, क्योंकि गप्पे मारना तो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैंने नोट्स बनाए हैं so that I can stick to the topic we are talking about. And again, thank you for being here. And I'm so thankful for all the 54 subscribers I have got. Yes. So much love and light to you. Namaste.